हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का एमबी मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करते हैं एनक्लेक्स बेस्ड क्वेश्चन ऑन बॉडी टेम्परेचर। प्लीज़ सभी आंसर देना। क्वेश्चन नंबर 1, ए नर्स रिकॉर्ड्स एन ओरल टेम्परेचर ऑफ 100.8 डिग्री फ़ारेनहाइट 38.2 डिग्री सेल्सियस। विच टर्म बेस्ट डिस्क्राइब दिस फाइंडिंग? ए हाइपरपायरेक्सिया, बी हाइपरथर्मिया, सी हाइपोथर्मिया, डी नॉर्मोथर्मिया। प्लीज गिव मी आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द मोस्ट एक्यूरेट कोर टेम्परेचर measurement is obtained from A axillary side, B oral cavity, C rectal side, D tympanic membrane. Please give me answer. Question number third, which patient is at greatest risk for heat stroke? A 6-year-old playing soccer in 25 degrees Celsius weather. B 70-year-old taking diuretic in 38 degrees Celsius weather. C 30-year-old resting indoor at 22 degrees Celsius. D 50-year-old after moderate exercise in 20 degrees Celsius. Please give me answer. Soccer means football player. Question number 4, normal adult oral temperature range is A 95 to 96 degree Fahrenheit, B 96.8 to 100.4 degree Fahrenheit, C 98 to 102 degree Fahrenheit, D 99 to 101 degree Fahrenheit. Please give me answer. Question 5, the nurse notes a patient's temperature is 34 degrees Celsius. First action: A give antipyretic, B apply cooling blanket, C initiate warning measures, D notify dietary. Please give me answer. Sixth question, which device is not recommended for infant younger than 3 months? A rectal thermometer, B temporal artery thermometer, C axillary thermometer, D digital skin probe. सभी आंसर दें। Seventh question, a client has chills, flushed skin and shivering. This stage of fever is called A crisis, B plateau, C onset chill phase, D deprivation. Question number 8, which condition is most associated with sustained fever? A pneumonia, B malaria, C septicemia, D tuberculosis. प्लीज स्क्रीन को पॉज करके कमेंट में आंसर जरूर दें। क्वेश्चन नंबर 9, antipyretic like acetaminophen reduce fever by A peripheral vasoconstriction, B lowering hypothalamic set point, C increasing shivering, D including diaphoresis directly. हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में दे। क्वेश्चन नंबर 10, बिफोर गिविंग एन ओरल टेम्परेचर द नर्स शुड आस्क इफ द पेशेंट ए smoked or drank hot or cold fluid within 15 to 30 minutes, B walked in hallway, C took a shower, D slept for more than 8 hours. 11th question, hypothermia can result from which electrolyte imbalance? A hypernatremia, B hypokalemia, C hyperkalemia, D hypocalcemia. Question number 12,
which is an early sign of heat exhaustion? A. Dry hot skin. B. Profuse sweating and dizziness. C. Core temperature more than 41 degrees Celsius. D. Loss of consciousness. सभी आंसर दे. 13 question. A client with sepsis shows a sudden drop in fever to normal with profuse diaphoresis. This phase is called A. Febrile. B. Crisis. C. Chill. D. Intermittent. Please fast give me answer. Question number 14. Which statement about tympanic thermometer is correct? A. Probe must touch eardrum. B. Earwax does not affect reading. C. Measures blood flow of carotid artery. D. Reading take 3 to 5 minutes. Question 15. Which intervention is priority for a client with hyperthermia of 40 degrees Celsius? A. Provide warm blanket. B. Restrict fluid. C. Apply cooling measure and administer antipyretic. D. Place in Trendelenburg position. 16th question. Which hormone primarily influence basal metabolic temperature? A. Insulin. B. Thyroxine. C. Cortisol. D. Aldosterone. सभी स्क्रीन को पॉज करें और फिर कमेंट में आंसर जरूर दें. Question number 17. In older adults, the normal baseline temperature is often A. Higher than young adult. B. Lower than young adult. C. Same as infant. D. Fluctuating above 39 degrees Celsius. Question number 18. The set point for body temperature regulation is located in the A. Pituitary gland. B. Hypothalamus. C. Medulla oblongata. D. Thalamus. बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है. Question number 19. Which finding requires immediate intervention? A. Axillary temperature 37 degrees Celsius. B. Rectal temperature 38 degrees Celsius. C. Tympanic temperature 35 degrees Celsius. D. Oral temperature 36.8 degrees Celsius. Question number 20. A nurse caring for a febrile child should avoid which action? A. Encouraging fluids. B. Giving antipyretics. C. Applying ice water directly to skin. D. Monitoring input and output. तो 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं. सभी हर एक क्वेश्चन का आंसर दे. पहले अपनी नोटबुक में हर क्वेश्चन का आंसर लिखे, उसके बाद में कमेंट में आंसर दे और लास्ट में अपना आंसर चेक करें विद रैशनल. कितने क्वेश्चन आपके सही हैं और कितने क्वेश्चन आपके रॉन्ग हैं, इससे आपकी स्टडी का पता चलेगा. हर क्वेश्चन का आंसर विद रैशनल है. प्लीज़ रैशनल भी पढ़े. आंसर के साथ रैशनल पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है. तो प्लीज़ कमेंट्स में आप बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं, कितने रॉन्ग हुए हैं, और जो रॉन्ग हुए हैं उनका भी रैशनल देखिए और जो राइट हुए हैं उनका भी रैशनल देखिए.
नेक्स्ट सभी कमेंट्स में बताइए कि आगे कौन से टॉपिक पे एमसीक्यूज लेकर आए।